I choose to live in Canada. I was born, my family's from Spain. I was born in Chile. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द शेफ्स वे में आबिद शरीफ आपको खुशामदीद कहता है। वेलकम, मरहबा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और यहाँ पर जो है आज अरब हेल्थ एग्जीबिशन हो रहा है। यहाँ पर 2 to 3 डेज़ जो है ये यहाँ पर होगी और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। इतनी जदीद इक्विपमेंट, इतने जदीद जो है हेल्थ के लिए, हेल्थ से रिलेटेड जो है ये आज का हमारा व्लॉग है। हेल्थ से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर एग्जीबिशन हो रही है, तो इसके अंदर पूरी दुनिया भर से जो है अराउंड द वर्ल्ड जो है जितनी भी जदीद इक्विपमेंट हैं, फैक्ट्रीज़ और जदीद बड़े जो हॉस्पिटल हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आज डिस्प्ले की हुई अंदर। तो आज हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे। आए हमारे साथ चलें। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें से आपको बहुत सा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि जो आप एंजॉय करेंगे। तो आए मेरे साथ। जी गाइस, तो ये है यहाँ पर इंट्रेस्ट और यहाँ से अब हम इन हो गए हैं और आज पूरा हम इसको विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जी गाइस, तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि कितनी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आई हुई है अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया से जो है वो यहाँ पर इक्विपमेंट जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आए हुए हैं। गाइस, अगर मैं बताऊं अरब हेल्थ के बारे में, तो यहाँ पर जो है काफ़ी जम्मे गफीर है एक हिसाब का। आज सेकंड डे है, एग्जीबिशन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ सऊदी अरेबिया से कंपनियाँ भी आई हुई हैं और यहाँ पर जितनी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो फाइंड कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी। At the beginning, we are Sahab company. We are from Saudi Arabia. We are owned by Red Crescent Saudi Arabia Authority, and we develop an IT solution for the Red Crescent. We provide at the beginning EMS services. Product such as Da'am. It's a platform that operates the calls from the emergency service, deploy it or retrieve it to the المسعف الإلكتروني in e-paramedic. The e-paramedic which is going to the patient and practice or do the emergency service for the patient. Then he will write the report in the system. The system is reflect to the طارئ application or platform, which is reflect in the hospital, knowing that the patient coming to them. This in the beginning our product. Then we develop more than product to help the EMS services, such training courses in Tamarras platform, and also a volunteer called Badal, a volunteer platform. They can register and do the volunteering to the patients. Also, we develop too many things also, like Aqd, which you can rent an ambulance for the private sector, and they have an ambulance doing the service for them. Also, we develop Tafaqqad, which is inspection platform, doing the inspection things for the any institution or any ministry, such Ministry of Health, Ministry of Tourism, and also we have a fleet management application or platform called Taqaffi. The fleet management for that platform. Also, we have Sahim platform, which is event management platform. You can rent an ambulance to do the. This is all made in Saudi Arabia. All made in Saudi Arabia, and there is another platforms not published here. It will be published next week. Also developed by Saudi in Riyadh, inshallah. Okay, thank you very much. You're welcome.
अच्छा, यहाँ पर जो रिमोट है उनके ऊपर लिखा हुआ है स्पेशली कि डू नॉट टच, आपको मतलब एक मुसीबत में डाल सकते हैं ये रिमोट। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस रिमोट? Yes, so basically these robots are used in hospitals and clinics to kind of help out patients and lighten the burden of medical staff. And what their functionalities differ according to robot. For example, this one gives screen. We have one which has an attachment for a wheelchair, where basically the patient can sit and the nurse or doctor or any staff can click on the location and it will go and drop the patient there. We have advanced robots like that. Let me show you. Like this, where basically it can also guide patients from one area to the another, and it can even book an appointment for and block it in the doctor's calendar. So this is a full-on, I would say, service desk, and it's good for hospitals if they want to, kind of, if they have too much flow or too much burden. So this can elevate the burden from them. And what about this another one? Yes, we have other robots here. Basically, we have delivery robots like that, where basically, and also patient in care. So for example, a patient is lying on the bed, they talk to the robot and ask the nurse, can I get like a blanket or something? And the nurse sitting on her desk can receive that request and say, okay, put the blanket on the robot and click the room and it'll go to the room itself. So nurse still on her desk can manage patient requests and manage even more volumes. यहाँ पर एम्बुलेंसेस हैं और जदीद एम्बुलेंसेस हैं, और इनकी बात जो है वो मैं अभी करता हूँ यहाँ पर जो इनके मार्केटिंग मैनेजर हैं उनके साथ, लेकिन मैं बात इंग्लिश में करूँगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो जदीद एम्बुलेंस को बनाया गया है। ये इनसाइड से आपको दिखा रहा हूँ मैं। यू कैन सी इनसाइड हाउ लुक्स इज इनसाइड, और यहाँ पर पूरा जदीद सिस्टम है। जी गाइस, तो अभी हम आपको यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है यहाँ पर, और ये हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हैव अ लुक एट दिस वन। So now you can see this is a which they have something here like they can stop, they can go, they can have option. So guys, अगर आपको मैं बताऊं इसका ये एक इसके अंदर एक्सेस है कि आप अगर किसी बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पर लिफ्ट का जो है वो नहीं है सिलसिला, तो आपको ये जो है स्टेयरकेस से नीचे इजीली लेके आ सकते हैं। So guys, have a look at this one, how they are taking inside the ambulance to the patient. But as you can see, I'm already touching the stretcher now. Yes. So in yes. this case, there's not a lot of space. Assalamu alaikum, Mr. Ahmed, how are you? Hi, good, thank you. Mr. Ahmed, can you please explain us about what's the new exhibition you bring? I see there is a lot of ambulance you install here. Okay, actually, as you can see here in Navco, we have to provide more than one ambulance type. Okay, as you can see here, this is the new ambulance which is called amphibious search and rescue ambulance, which is the advanced one. As you can see here, this type of ambulances, we have two standards of ambulances. It's either goes for American or European standard. Okay. This one is American standard for transit T150 with a medium roof. Okay. We use the Entrax system, which is supplied from Ferno, and this is the main stretcher, and this is the mattress. The Entrax system, it gives you the options to remove all the medical cabinets and to use, instead of all the portable ones, special like bags, portable suction unit, defibrillator, you can just shuffle the medical equipment and put it wherever you want. And there's the 360 cameras inside, and internal and external 360 cameras, and as well the warning lights, which is also in 360. Thank you. صحية منزلية. شو الهدف من هذه المبادرة؟ هذه المبادرة نهدف فيها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية لكبار المقرارية حالته، في حال إذا مثلا سوينا له غسيل الكلى في البيت، هل حالته راح تكون مستقرة؟ فنبدأ مع هاي الخدمات كلها تكون منزلية.
فطبعا شروط المبادرة خلينا نقول تخصص القلب في أي مستشفى أفضل وعند أي دكتور أحسن. It is very beautiful. I choose to live in Canada. I was born, my family's from Spain. I was born in Chile, but I live in Canada. I love Canada, and we're so happy to be here. We are working with many different countries to help them connect their health systems. So we're part of a global group called HL7. It's a new standard. التسجيل المركزي نسجل اللي هي الشركات اللي تشتغل في الأدوية والأجهزة الطبية في دول مجلس التعاون. فحص الوافدين احنا نعتمد مراكز صحية في عدة دول حول العالم، عندنا حاليا 23 دولة. عن طريق المجلس احنا نعتمد مراكز صحية لفحص الوافدين قبل ما يجوا لدول مجلس التعاون. هذا بآخر تكنولوجيا آخر تطور، اللي هو عنده شحنتها تحمل 6 كيلوغرام ومسافة طيرانها اللي هي ساعتين، اللي هي راح بتكون 200 كيلومتر إن شاء الله. هذا ما في شيء يعني مثلها بالسوق، وإن شاء الله إحنا طبعا شركة إماراتية في أبو ظبي بمصدر سيتي، وهذا أول فرصة لنا إن نشتغل إن شاء الله ونوصل فكرتنا هذه وهندستنا المتطورة طبعا في خدمة البلاد. जी गाइस, तो आज के व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ पर आके। जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया से यहाँ पर लाई गई है। आपको हमने दिखाई एम्बुलेंसेज और सब एवरीथिंग जो है वो हमने आपको कवर करके दिया है इस व्लॉग में। इट वाज अ गुड डे एंड गुड टू सी दिस ऑल इक्विपमेंट न्यू विच इज़ डिस्प्ले इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अरब हेल्थ एग्जीबिशन।